Let's start. As we'll discuss in the classroom, that the first class would be about construction of a human being and its role in immediate environment. So for this, first we have to understand what is a human being. Because if we know the definition of a human being or the psyche of a human being, only then we will be able to treat a human being. So whenever we define human being, it is always defined in two parts. One is by the things around us. Like we always say, my name is this, my address is so and so, I'm son of that, I'm daughter of that, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a mild personality, I'm a angry personality, I'm this, I'm that. It's always we define ourselves in terms of outside environment. कि जो लोग हमें समझते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, जिस हिसाब से हम अपने आप को उस तरह डिफाइन करते हैं. This is how we define ourselves. या फिर we always define ourselves about my learning. Yeah, I'm a BHMS, I'm an MBBS doctor, or I'm a communist, or I'm a businessman, I'm so and so. I'm a Hindu, I'm a religion, I'm a Muslim. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. तो that means हमने अपने आप को डिफाइन किया हुआ है एक एस्पेक्ट के हिसाब से, एंड दैट एस्पेक्ट इज कि जो भी हमारे बाहर हो रहा है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारा वर्ल्ड जो है, उसके हिसाब से हम अपने आप को देखते हैं कि now this is me, and this is the biggest illusion that we live in. और वो illusion क्या है? That illusion is कि we define ourselves by how the world sees us. जिस हिसाब से हमें वर्ल्ड देखता है, उस हिसाब से हम अपने आप को समझते हैं, अपने आप को देखते हैं, या अपनी एक डेफिनेशन बनाते हैं, दिस इज मी. सो और उसके हिसाब से हम अपने एक स्पेसिफिक एक कैरेक्टर बना लेते हैं. वो कैरेक्टर क्या होता है? जिसको हम नाम देते हैं कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम अ नेगेटिव पर्सनैलिटी, आई एम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, आई एम अ कम्युनिस्ट, आई एम अ सो एंड सो. और पूरी की पूरी जिंदगी हम फिर उन्हीं कैरेक्टर को डिफाइन करने में, उनको इवॉल्व करने में, या उनको समझाने में लगा देते हैं पूरी के पूरी दुनिया को. बट रियलिटी में होता क्या है? इन रियलिटी our mind of the real we are made up of two parts. And what is that two part? One is the conscious part. A conscious part is divided into two parts. The good me. हम हमेशा अपने आप को ये शो करते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी आदतें बहुत अच्छी है, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है. इस तरह से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज कोई भी अपना बुरा चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं होता, और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. पर उसके साथ साथ हमारा एक बैड पार्ट होता है. एंड व्हाट इज द बैड पार्ट? दैट इज अ पार्ट जो हम अपने आप में डिसलाइक करते हैं. वो पार्ट जो हम अपना चेहरा किसी को शो नहीं कर सकते, जो सिर्फ हम जानते हैं. जब हम घर के अंदर बैठे होते हैं, जब बिल्कुल अकेले होते हैं, जब कोई हमारे आसपास नहीं होता, वो भी हमारा एक एस्पेक्ट होता है जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ हमें जब हम अकेले होते हैं उस टाइम पे पता होता है. एंड दिस इज also the bad part of me, and this is never shown to anybody in this world. वो क्यों नहीं होता? Because if it would be shown to the world, maybe the world would think bad about us, and when the world would think bad about us, that will create a problem for us. And what is the problem? That problem would be कि लोग मुझे बुरा बोलेंगे. अगर लोग मुझे बुरा बोलेंगे, then I will be not fit to live in the society, क्योंकि society मुझे अलग कर देगी. बिकॉज बहुत डीप डाउन ये जो बैड पार्ट है, छुपाने का कारण क्या होता है कि अगर मैं बुरा एस्पेक्ट छुपाऊंगा तो सोसाइटी मुझे हेट करेगी, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे कोई लव नहीं करेगा, मुझे कोई केयर नहीं करेगा. आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी. एंड जस्ट टू लिव इन द सोसाइटी, वी लिव अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी.
This is the conscious part. This is the good part. And the bad part, we never show it to anybody else. But it's only we know about that. हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं और हम चाहते भी नहीं कि वो किसी को मालूम पड़े. This is the conscious part. This is the one part of the mind. And then there is another part. And that part is the unconscious part. जिसे बोला जाता है not me. And what is this not me? It is that part which is totally unacceptable to us. Totally unacceptable. जिसको हम hate करते हैं. तो वो चीजें जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं होती अपने अंदर, वो हम खुद को रिप्रेस कर देते हैं. खुद के अनकॉन्शियस के अंदर उनको हम दबा लेते हैं. कैसे दबाते हैं? बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेशन. सपोज आपके अंदर से एक इंपल्स आ रही है. इंपल्स क्या आ रही है? दैट टू किल समबडी. हाउ टू किल समबडी? बाय सीइंग ब्लड. कि जब तक आपको ब्लड ना दिखे आपको मजा नहीं आ रहा. आपके अंदर से इंपल्सेस आ रहे हैं. आपके अंदर से इंपल्सेस आ रही हैं कि आप किसी को अपनी कार के नीचे कुचल दो. अगेन दिस इज समथिंग यू हेट. और जब भी ये चीजें डेवलप होती हैं आपके सामने, आपको एक डर लगता है कि ये किसी को पता ना चल जाए. और आप खुद भी सोचते हो कि ये सिम्टम, ये थॉट या ये इंस्टिंक्ट मेरे अंदर कहाँ से आ रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आया बहुत ज्यादा. गुस्से में आप कई बार किसी को ऐसे ऐसे शब्द बोल जाती हो, ऐसे ऐसे बातें बोल जाती हो, आपको खुद ही नहीं पता होता कि हाउ कैन आई रिएक्ट इन सच अ वे. व्हाई सो? इट्स बिकॉज कि आपका इंस्टिंक्ट अंदर से आता है कि आई शुड डू समथिंग. आपके पे कंट्रोल नहीं रहता. या आप कुछ ऐसा कर जाते हो उस गुस्से के अंदर जो बाद में आप सोचते हो कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया. दिस इज नॉट मी. हाउ कैन आई डू दिस थिंग टू दैट पर्सन जो आप किसी को शो करना चाहते हैं. एंड दैट इज द इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ यू. दैट इज टोटली इरेशनल, टोटली इलॉजिकल. आप नहीं चाहते कि कैसे हो गया मेरे साथ. मैंने चाहा भी नहीं था, ऐसा फिर भी हो गया. दैट इज द अनकॉन्शियस. फिर आप सोचते हो ये कैसे आया. समटाइम्स यू गेट ड्रीम्स. ड्रीम्स कैसे आते हैं? कि ऐसी जगह जो कभी आपने नहीं देखी, एक ऐसा सीन जो कभी आपने नहीं देखा, एक ऐसी इमेज जो कभी आपने नहीं देखी. इट्स टोटली इरेशनल, टोटली इलॉजिकल. उस इलॉजिकल को आप जब देखते हो फिर आप घबराते हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे आ गया, ये अजीब चीजें मेरे साथ कैसे आ रही. कई बार आपके थॉट्स इस तरह से आती हैं बैठ अकेले में या सबके सामने, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते. चलता रहेगा माइंड में, कुछ भी चलता रहेगा. आप सोचते हो ये कैसी, ये अजीब सी चीजें कैसे हो रही. समटाइम्स यू गेट different types of sensation in the body which you are unable to explain. वो कहाँ से आती है, वो भी आपको बहुत अजीब लगती है. एंड यू से कि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं. कभी आप किसी के साथ बैठे होते हो और आप सोचते हो कि ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है. कैसे हुआ? वी डोंट नो, राइट. वो जब पहले ऐसे हो चुका है, आपके थॉट आता है, देन यू से कि ये अजीब क्यों हो रहा है मेरे साथ. दैट इज योर अनकॉन्शियस पार्ट. दैट अनकॉन्शियस express itself from you. So this not part is always denied because one, that illogical and irrational part of you, you never want to show to anybody. Second is you don't even want to experience that illogical, irrational part because this mind always wants to know the जिसको वो जानता है. जो चीज वो नहीं जानता उसके लिए वो अजीब होती है, उसको वो घबराहट कॉज करती है. इसलिए वो कभी वो चाहता भी नहीं कि वो उसको देख. दिस पार्ट दैट इज डिनाइड, इट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड आउटसाइड. वो बाहर प्रोजेक्ट होगा इनटू द वर्ल्ड. और वो कैसे प्रोजेक्ट होगा इनटू द वर्ल्ड? जैसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट वुड यू डू इफ यू विल बिकम इनविजिबल. सो आई गेट मेनी डिफरेंट इरेशनल आंसर्स. किसी को शोरूम में से गाड़ी चुरानी है, किसी को बैंक लूटना है, किसी को किसी के घर में जाकर झांकना है कि वो क्या कर रहा है, किसी को ये देखना है कि जो जिसको वो हेट करता है वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी को ये देखना है कि मेरे पीछे से मेरे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, किसी को ये देखना है जिससे वो नफरत करता है उसको जाके मारे, जिसको ये देखना है कि उसको इतना मारे कि
और पता भी न चले, किसी को बहुत अच्छे काम करने हैं, बट जितना भी आपने वो करना है, अभी still you have not defined that irrational, the weird part of become invisible, क्या करोगे? और कितनों ने आंसर नहीं भेजा बिकॉज उनको ये लगता होगा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, मे बी the other person would think bad about me because they were still in their conscious mind. But the idea is कि जब आपको वो थॉट्स आए कि जब आप इनविजिबल हो जाओगे, वो आप रियल लाइफ में क्यों नहीं कर पा रहे? दैट इज अ क्वेश्चन. जो चीज आप विजिबल होके कर रहे हो, इनविजिबल होके क्यों? बिकॉज द इनविजिबल पार्ट इज योर अनकॉन्शियस. क्योंकि वो अनकॉन्शियस ऐसा है जो अपने आप को शो नहीं करना चाहेगा. कि अगर किसी को पता लग गया, एवरीबडी विल थिंक बैड अबाउट मी. दैट इज योर कॉन्शियस पार्ट, कि वो कॉन्शियस में आ रहा है, इसलिए वो इस तरह हो रहा है. क्योंकि कॉन्शियस माइंड इज द पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, योर लॉजिक, योर थॉट प्रोसेस. And the invisible part, the unconscious part, is or the part which you define yourself by your five senses. Five senses को क्या चाहिए? Pleasure. That's it. जिससे वो मजा ले सके दुनिया का. और इनविजिबल होकर आप वही मजा लेना चाहोगे. That is why कि जो भी चीज आप नहीं कर पाते, वो आप फिर लोगों में देखते हो. जो भी चीज आपको अपने अंदर बहुत अजीब लगती है, बहुत डिफरेंट लगती है, बहुत जिससे आप नफरत करते हो, वो आप लोगों में देखना शुरू करते हो. Like for example, if you get the lewdness, if you get the sexuality or sexual thoughts within you, your conscious mind would say, no, this is wrong. This is not supposed to happen. Then what you do is, you project that into the outside world. फिर आप क्या करोगे? जितने वो लोग जो लेसिवियस हैं, जो ल्यूड हैं, जो सेक्सुअलिटी शो करते हैं, वो आपके लिए एकदम से बुरे बन जाते हैं. अंदर से आपके अंदर इम्पल्सेस आ रहे हैं टू किल समबडी. अंदर से आपको इम्पल्सेस आ रहे हैं कि आप किसी को बहुत टॉन्ट वाली बात बोलो, बट यू कंट्रोल दैट कि अगर मैं वो बोलूंगा तो मुझे बुरा बोला जाए. देन व्हाट यू डू, देन यू प्रोजेक्ट द सेम थिंग इनटू द पीपल. जो लोग सरकास्टिक होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, क्वारलसम होते हैं, देन यू स्टार्ट हेटिंग देम. दिस इज प्रोजेक्शन. It's only you who is seeing that person as lewd. It is only you who is seeing that person as violent, quarrelsome, or sarcastic. So, who is who? We don't know. It's only a projection of your unconscious mind into the external world. Kyun? Just to get accepted into the outer reality. And this is the greatest thing that we have to understand कि जो भी thought process, जो भी चीजें हमारे अंदर आती हैं, जो भी चीजें हम किसी के अंदर hate करते हैं, that is a part of us. So that is why our mind is divided into different parts. One is the persona or the conscious mind. One is the subconscious mind, which is deep down into the deeper than the conscious mind. And then still deeper to subconscious mind is the personal unconsciousness or the shadow. And still deeper to it, the collective unconsciousness. This collective unconsciousness is a part that we have inherited from our ancestors and which we share with all the human beings because of the evolution. And still deeper to that is the anima or the animals. We'll discuss it later. So what is persona? It's your outward mask. It's your mask which you show to the external world. अब होता क्या है? It's the way you present yourself to the world. It's the character of traits that you let show and the way that people will see you. It's a social mask. It's a mask of logic. It's a mask of thought process. It's a mask of thinking. All this is your persona, your outward image in the society, the what people think about you and what you think about yourself, how you present yourself into the world. That is your persona. It's like this. It's like an iceberg. कि जो 1/3 portion आपको समुद्र के ऊपर दिखता है, that is your conscious mind, that is your identity, that is your persona. It's only the 10% of the part. But the deeper part, which is hidden inside you, which the people does not know about it, which sometimes even you don't know about it,
That is your unconscious mind. That is your shadow. That is your inner self. And that is what controls your whole being and which you are unaware about. And that is a 90% of the time. So this unconscious or the shadow part of you is these are those parts of the personality that we choose to reject and repress. That we don't want to show it to anybody else because we all have parts of ourselves that we don't like or that we think society will not like. So what we do is we push those parts down deep down into our unconscious psyches, and this is referred to as our shadow. This is the hidden part of you. This is the unconscious part of you. This shadow is which is never shown to anybody else. And these rejected aspects of reality forces us to think about them more intensely. The more we try to prove that we are decent, the more we hate the lewd character of others. जैसा मैंने आपको बताया अभी, जितना हम अपने अंदर से नफरत करेंगे, जितना हम खुद से अपने ही कैरेक्टर से नफरत करेंगे, उतना ही हम वो सेम चीज दूसरों में ढूंढेंगे, उतने ही हमको वैसे लोग बुरे लगने लग जाएंगे. तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप से ही we distance ourselves psychologically from those behaviors, those emotions, those thoughts that we find dangerous, and then we project all those symptoms, all those characters into the outer world. कि मेरे अंदर एक बहुत घिनौना कैरेक्टर है जो मैं नहीं लाइक करता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं वो दूसरों में देखना शुरू कर देता हूँ, और उनमें देख के फिर मैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ, उनको हेट करना शुरू करता हूँ, उनको अपने आप से दूर रखना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज मुझे वो एस्पेक्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है. आई डोंट वांट टू फेस दैट एस्पेक्ट ऑफ मी. सो इट्स लाइक दिस. So I don't admit that I am bitter, so I will project it to somebody else. That person is very bitter. I am very angry from inside. I don't want to anger because in anger I don't know what I'm doing, what I'm talking about, what I'm behaving like. So I will project the same anger into the other person, and I will say I don't like the persons who are very angry, who are very impulsive, who don't know what to say in anger. So I always project those things into the external world. We don't like the people talking behind my back. So what does that mean? It means somewhere deep down I am talking something about the other people, and I don't like that aspect in me. So what I do is I will project it to somebody else. मुझे वो लोग नहीं पसंद जो बैक बाइटिंग करते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो झूठ बोलते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो रिलीजन की कदर नहीं करते, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो इम्पल्सिव होते हैं. Right? So projection is defending themselves against their own unconscious impulses or qualities by denying their existence in themselves while attributing them to others. It's just the same thing as silencer in Three Idiots. The way he farted, उसके बाद फार्ट करने के बाद he said I didn't do it, किसी और ने किया है, किसी और पे प्रोजेक्ट कर दिया. So यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस अनकॉन्शियस को एक्सप्रेस करने से हमें कौन रोकता है? हम क्यों एक्सप्रेस नहीं करना चाहते वो अपना unconscious? Because अगर वो एक्सप्रेस हो गया, it would produce havoc in the society. It would be a chaotic situation, very chaotic. जैसे एक मूवी देखना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता गोविंदा की, उसमें होता क्या है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है और वो उससे कंट्रोल नहीं होता, और उस वजह से पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सबके मुंह पे उनकी बुराई बोलनी शुरू कर देता है. तो कौन रुकता है? इट इज द ईगो. दिस ईगो, it stops the unconscious from being expressed into the unconscious. It's the ego and the superego. So because unconscious, I want to do it, I want to do it right now, and ego बोलती नहीं, let me plan it, जिस वजह से सोसाइटी देख ले, लोग देख ले कि वो कैसे एक्सप्रेस करनी है, let me handle that. So what is ego? It's a mediator between conscious and unconscious mind. It expresses the instincts of unconscious into the socially acceptable terms. It's a kind of social mask that an individual wears to help in the external world.
So it's the ego which keeps an individual in touch with the outer reality, keeping in check with the pressures of coming in from unconscious. कि जितने प्रेशर अनकॉन्शियस से आ रहे हैं उन पे चेक रखना, उनको एक्सप्रेस ना होने देना. तो इसलिए वेल डेवलप्ड ईगो होना बहुत जरूरी है ताकि वो इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी को परमिट कर सके, उसको प्रॉपर से हैंडल कर सके. तो अगर ईगो स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी, we are less prone to any mental diseases. So it's the one who suffers the most because there is a conflict between the conscious and the unconscious mind, जिस वजह से ईगो सफर करती है. और ईगो सफर होने की वजह से हमको वेरियस पैथोलॉजीज डेवलप होती है, mental pathologies like anxiety, OCDs, anxiety neurosis, schizophrenia, psychotic breakdowns, panic disorders, सब ego की वजह से होते हैं. So because ego has to serve three masters: the unconscious, the superego, and the external conscious. And why can't the ego express all the unconscious freely into the reality, into the outer world? It's because of the superego. Superego punishes the ego अगर कोई भी unconscious express हो गया तो. So it incorporates the values and morals of society which are learned from one's parents and others. The superego function is to control the unconscious from being expressed, especially those from the society forwards. This superego is a moral part of self. It tells what is right, what is wrong. It is always learned through the external world. It punishes the ego through feelings of guilt when the ego doesn't obey the superego. But it can also reward ego if you follow the superego by feeling proud that yes, I have done something right. And what are the tools of ego? How does the ego controls the unconscious from being expressed? It has different tools. So one of the tools is repression. It pushes the unacceptable things deeper into the unconscious by creating more and more shadow. Second is by displacement. Any unacceptable idea is transferred to the acceptable. Like I've told you, whatever you hate something in one person, it is expressed onto somebody else. So if somebody hates his father, he cannot say directly that father I hate you. So this thing is expressed onto somebody जो उसके father से resemble करेगा. And then undoing. It is by if you have done something wrong, if you have done something that is unconsciously expressed, then you try to reverse it by doing repetitive things, as seen in diseases like OCDs. Another is by conversion, by converting the physical psychic conflict into some physical symptom like a pain. Some like I had a case जिसमें anxiety होते that is not expressed, it is now converted into toothache or different pains in the body. जब वो body में pains होती हैं, we can't say कि ये क्यों हो रहा है. It's because there is some problem in the ego. Then there is dissociation, regression. We will discuss this further when we discuss the mental diseases. So what is it? Is the ego strength. कितनी ईगो में हमारे में ताकत है जिस वजह से हम उसको हैंडल कर पाए. That is the basic criteria. So ego is constantly under the pressure of inner and the outer world. It has to create a balance between the two, else it will suffer. So in order that it should not suffer, it has to be strong enough to be able to handle all the pressure of the inner and the outer world, to be able to handle the unconscious and superego effectively. अगर ईगो स्ट्रांग नहीं होगी, ईगो वीक होगी, उस वजह से क्या होगा, या तो सुपर ईगो उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, और जितनी सुपर ईगो उस पर इम्पोज होगी उतनी ही ज्यादा गिल्ट फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, उतनी ही ज्यादा अपने आप को पनिशिंग एक्ट करनी शुरू कर देगा पेशेंट. दूसरा क्या होगा, अगर ईगो वीक है, सुपर ईगो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, देन द अनकॉन्शियस विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, जहाँ पे ईगो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी. तो उस वजह से क्या होगा, ईगो हमेशा एक थ्रेट में रहेगी कि कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए, कुछ एक्सप्रेस ना हो जाए, जिस वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइटीज डेवलप हो जाएंगी. सो ऑल डिजीजेस ऑफ माइंड occur because of the weakened ego. To a large extent, also the physical problems. If the ego is too strict, neurotic, anxiety disorders, panic disorders, OCDs will occur. If the pressure of unconscious is too much and the ego is weak, then various dissociative disorders, psychotic breakdowns, schizophrenia may occur. So, what is the goal? The goal is to achieve a state of wholeness, to be in a state of completeness by accepting the inner as well as the outer world. This should be our goal. And to understand the inner self and its working,
then applying it into the external world with the help of ego and superego, then what would happen? Then we will be able to understand our purpose of living. It is only then we will be able to evolve for the higher purpose of our existence. We will achieve the ideal state of health. So that is why Hahnemann is written in ninth aphorism, in the healthy condition of man, the spiritual vital force, the dynamism that animates the material body, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regards both sensation and functions, so that our indwelling reason-gifted mind can freely employ itself, healthy instrument for the higher purposes of existence. This is health. So what we have to understand is we have to understand the ego कि किस person के अंदर ego कितनी defined है. So this is the basic idea about it. Next class के साथ we will discuss about all the mental problems like the anxieties. उस time पे we will discuss in detail about the ego and its problem, right? So thank you for now. So we'll meet in 1 or 2 days. I will let you know in the group. Thank you. Bye bye.